गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय खाखिल आज आप लोगों के लिए कंप्यूटर नेटवर्क में थर्ड यूनिट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से नेटवर्क लेयर काम करता है, किस तरीके से इस नेटवर्क लेयर के अंदर पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल काम करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जिसको पीपीपी के नाम से जाना जाता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो डेटा लिंक लेयर के साथ में ट्रांसमिट करता है मल्टी प्रोटोकॉल डेटा को, जो दो और दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। इसको बाइट ओरिएंटल प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन के रूप में हम इसको यूज में लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP is a communication protocol of the data link layer that is used to transmit multi-protocol data between two directly connected point-to-point protocols computers. It is a byte-oriented protocol that is widely used in broadband communication, having heavily loaded and high speed. Since it is a data link layer protocol, data transmitted in frames, it is also known as RFC 1661. Then the services provided by the PPP point to point protocols. The main services are here. The main services provided by the point to point protocol are defining, number one, defining the frame format of the data to be transmitted, and another one is defining the procedure of establishing link between two points and exchange of data. एक होता है starting the method of the encapsulation of network layer data in the frame. तो starting authentication rule of the communication devices, providing the address for the network communications and providing the connection over the multiple links. Then supporting a variety of network layer protocol by providing a range or services. Then what is the component of point to point protocol? The point to point protocol is a layered protocol having their components, encapsulation components. It encapsulates the datagram so that it can be transmitted over the specialized physical layers. Then link control protocol. Link control protocol, it is responsible for the establishing, configuring, testing, maintaining and terminating link for the transmissions. It also impact negotiation for setup of operation and use of features by the two endpoint of the links. Another one is authentication protocol. Authentication protocol, these protocol authenticate endpoints for the use of the services. The two authentication protocol of PPP are password authentication protocol, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PAP, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स। इन चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल CHAP. Another one is the network control protocol NCP. These protocols are used for the negotiating the parameters and facility for the network layer for every higher layer protocol supported by PPP. One NCP is there. Some of the NCP of point to point protocol: Internet Protocol Control Protocol IPCP, OSI Network Layer Control Protocol, and Internet Packet Exchange Control Protocol. Another one DE Client Phase 4 Control Protocol.
नेट बायोस फ्रेम कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक IPv6 कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये सारे के सारे नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल्स होते हैं। जो आपके सामने ये डायग्राम है, इसके अंदर नेटवर्क लेयर्स यहाँ पर होता है। इससे पहले सबसे पहले क्या होता है, फिजिकल लेयर्स होता है। फिजिकल लेयर्स के अंदर फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल्स यूज में आते हैं। देन आफ्टर डेटा लिंक लेयर होता है। डेटा लिंक लेयर के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज में आते हैं, NCP होता है, IPCP होता है, OSINCP होता है, IPXCP होता है, एक होता है PAP पॉइंट एड्रेस प्रोटोकॉल होता है, एक CHAP प्रोटोकॉल होता है, एक LCP प्रोटोकॉल। देन आफ्टर नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स होता है, जिसके अंदर डेटा फ्रॉम द नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, डेटा सारा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू कनेक्टेड होता है। देन इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल फ्रेम्स क्या होता है, इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज ए बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल वेयर ईच फील्ड ऑफ द फ्रेम इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर बाइट। द फील्ड ऑफ PPP फ्रेम आर, एक होता फ्लैग, एक होता एड्रेस, कंट्रोल, प्रोटोकॉल, पेलोड, FCS। The byte that marks the beginning and the end of the frame, the bit pattern of the flag 0 1 1 1 1 0. Then address, one byte which is set of the 1 in case of the broadcast. Another one is the control, one byte set to constant value of 1 1. पापो उरतानी बांग मारतो बिकम आवाज क्या मतलब नीरू मेरी बनके बांग क्या मरवा रही है पाप, मेरा मतलब क्या है लेक्चर बनाने को। कंट्रोल, one byte set to constant value of 11000. Then protocol, one or two byte that defines the type of data content in the payload field. Payload, this carries the data from the network layer. The maximum length of the payload field is 1500 bytes. However, this may be negotiated between the endpoint of the communications. FCS, it is a 2 byte or 4 byte frame check sequence for the error detection. This is standard code used in CRC, cyclic redundancy code. Then PPP frame. PPP frame is divided in 8. 1 byte flag, address 1 byte, control 1 byte, protocol 1 or 2 bytes, payload variable, FCFS 2 to 4 byte, flag 1 bytes. Then byte stripping in point to point protocol framework. Byte stripping is used is PPP payload field whenever the flag sequence appears in the message, so that the receiver does not consider it is the end of the frame. The escape byte 0111 is stubbed before every byte that contains the same byte as the flag byte or the escape byte. The receiver, on the receiving the message, remove the escape byte before passing it into the network layers. होता लॉजिकल एड्रेसिंग. The logical address are created and used by the network layer protocol such as the IP or IPX. The network layer protocol transitions logical address to MAC address. Whenever a program is running, an address is generated by the central processing unit called logical address, which does not exist the physical, it only exists the virtually, and hence it is also called as a virtual address. The central processing unit physically memory located
Location can be accessed by using this virtual address as a reference, and the set of all the logical address generated by the central processing unit is called logical address space, and the mapping of these logical addresses to the physical address is done using the hardware device called memory management. Until this is the CPU logical address 346, relocation register 14,000 MMU, and physical address, then memory. Example, if you use IP as the network layer protocol, device on the network are assigned IP address such as 207.120.67.30 because the IP control must be use a data link layer protocol to actually send packets to devices. IP must know how to translate the IP address of the device to the device MAC address. Functions. The logical address is used to reference to access the physical memory locations. A logical address is generated so that a user program never directly access the physical memory and the process doesn't occupy memory which is acquired by the another process, thus corrupting that the process. The memory page allocated to a program don't even have to exist in RAM. The operating system can write a page out of your storage device and only load the page when it's the accessed. Then advantage, they are necessary for universal communication that are independent of the physical network. The logical address remains the same while the physical addresses change from hop to hop. थैंक यू। ये था आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करता है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। थैंक यू।